Hello and welcome back on my channel, Anshum's World. Today we are going to Umananda Island for puja in Umananda Temple. Now we have to book the ticket in ticket counter. So come and follow me. Umananda Island. For safety, we should wear life jackets. See the brahmaputra river. Reached to Umananda Island, we will explore the Umananda Island, and in the temple will be so many white monkeys. The local vendor is selling fruit chaat. This is the front gate. The Umananda Island is even called Peacock Island because from upper view you will see there are much greenery, so it looks like feathers of peacock. Come and follow me. Get the puja materials in here itself. We will do puja here. Ganpati Bappa Moria, Mangal Murti Moria. मेरा नाम अशोक शर्मा, मैं उमानंद पुजारी हूँ। ये है बाबा उमानंद। उमा मतलब पार्वती, नंद है शिव। दोनों यहाँ बैठ के आनंद किया है, सारी युग का तालाब किया है, इसीलिए बाबा का नाम है उमा आनंद उमानंद। स्वयंभू लिंग है, कोई बना नहीं है, दापर युग का है, राजा महाराजा दिन का बना हुआ है। शिव और पार्वती यहाँ बैठ के आनंद किया है, सारी युग का तालाब किया है, दापर बोली तेता सत्य सारी युग है।
शिव ने पार्वती को समझाया है कि राज्य कैसे चला जाएगा, राजा प्रजा का कैसे हाल हिस्ट्री होगा। इसीलिए शिव और माता पार्वती यहाँ बैठ के आनंद किया है। इसीलिए बाबा का नाम है उमानंद उमानंद। स्वयं बोलेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी का बीच पे रुका हुआ है, कोई हेरी नहीं है। स्वयं बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी दोनों साइड होकर दूरधारी होकर चला गया, बाबा को बीच पे रुका दिया। इसीलिए बाबा का नाम है उमानंद। इस पहाड़ का नाम है भस्मासुर। कामदेव ने रति देवी को भस्म किया, इसीलिए इस पहाड़ का नाम है भस्मासुर। नमस्ते, श्री अशोक शर्मा, उमानंद। The temple is situated on the top of a hill called Kasmakola. One must come here with relaxing time. It will take time to cover all the parts of Umananda Island. We are enjoying snacks and view here. You already saw my road trip vlog. When I was a kid, I used to play clam with these pistachets. The temple timing is 5:30 am to 6 pm and the ferry timing is 7 am to 4:30 pm. Ferry cost per person rupees is 20. In Umananda Island, we could not find any white monkeys. When my parents came here last time, so they saw white monkeys. I hope our generation will miss the white monkeys. Look, there are two ferries. One is going to Umananda Temple and another is coming to Umananda Island. Look, the sunset view. The sun is reflecting on Brahmaputra river. Such a lovely view. Ending my vlog here. If you like my video, so like, share and subscribe my channel to view my other video also. And I have so much fun exploring Umananda Island. And bye bye. Goodbye.